है बे बार बार। हाँ, जिंदगी एक जुआ है। और हम जुए से कतई दूर रहते हैं। Spandiosa. Alok bhai, welcome to the stream. साउंड बहुत ज्यादा है बे इसका, मुझे अब भी रियलाइज हुआ। आलोक भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। इसके तो कहाँ गया वो म्यूजिक साउंड, देखो तो जरा। इतना कम कर दिया, ठीक है चलो अभी। क्या क्या हो गया मेरे स्ट्रीम पे यार। आलोक भाई 309 से आंकड़ा आगे ही नहीं जा रहा, क्या पनौती लग गई 309 पे, समझ में नहीं आ रहा। हाँ ना बे। 309 से गाड़ी खींच नहीं जा रही। Epic Gamer, welcome to the stream buddy। क्या हुआ आलोक भाई फिर, कल कल का क्या हुआ? कल तो मैं यार आया भी नहीं। एंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, एंडिंग एंडिंग में तुम लापता हो गए थे। गर्मी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। किसी दिन गर्मी के ऊपर केस कर दूंगा मैं, सच में। साला गर्मी के वजह से ना मेरा दिमाग है ना काम करना बंद कर देगा एक आध दिन। फटाक से कूलर लेना पड़ेगा मेरे को। कूलर के बिना मेरी जिंदगी अधूरी हो गई है। हाँ नहीं, वैसे तो मैं पहले कभी कूलर यूज नहीं किया, बिकॉज क्योंकि मैं स्ट्रीमिंग करता नहीं था, तो एवरी टाइम पंखे के नीचे है एकदम टांगे फैला के बैठा रहता था बीजीएमआई खेलते हुए। दैट्स व्हाई रीजन। बट अभी क्या, अभी सीन अलग हो चुका है। अभी मुझे स्ट्रीम करनी पड़ती है, तो इस वजह से मैं पंखे के नीचे बैठ नहीं सकता। हम्म। हेलो मूनलाइट क्वीन, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या करना था अपने को? कलेक्ट द ओ भाई इनके अबे रुक रुक, वो चिड़िया का है। तो अभी मैंने ये स्पीक विद डिक डिक।
I've collected some magical materials, 𝐥𝐤𝐤𝐞. Now, 𝐥𝐤𝐤𝐤 can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try Enchanted it? room. 𝐥𝐤𝐤 thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. आलोक भाई स्ट्रीम पे आवाज बराबर है क्या या ज्यादा कम है बता दो मेरे को क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लग रही है मेरे हेडफोन में enchanted loom what ये क्या था ये कैसे करना है जब पे करना क्या है मे बी आई थिंक सो मुझे पता है वो क्या है बोला ना यही कह रहा है वो अरे वाह ऐड कुछ कह रहा है वो ओह माय गॉड अपन पेन के कौन से रखे मुझे पता नहीं ना रुको अपने पास क्या क्या पहले देखते हैं जो बिन काम का है वो सब निकाल के फेंक देता है ये एक है ये पेन ले इसको निकाल दे और हैट ओ माय गॉड हैट देखो कितनी सारी है इसको निकाल दे एंड इसको भी निकाल दे एंड इसमें क्या क्या ओ माय गॉड लुक एट दैट इतने सारे कैसे आ गए मेरे पास रुक 32 35 28 गलती से गलत अभी डिस्ट्रॉय हो जाता ओके कितने कुर्ते अपने पास एक 99 पे एक ही एक है ठीक है चलो इसको डिस्ट्रॉय कर दो अब क्या वजह है चलो स्काप तो है क्या अब बताओ इसका करना क्या है ट्रेल अपग्रेड फ्रॉम व्हाट आइटम ऐड कौन सा आइटम कह रही है अरे वाह कौन सा अबे ये क्या कह रहा है भाई कौन सा आइटम कह रहा है ये This will be more useful when I have something to identify.
ये जगह बढ़िया है। I don't have anything for this at the moment. कसम क्या कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसको डिस्ट्रॉय कर दूं। अरे 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 हेल्थ 700 एंड डिफेंस 171 ऑन ऑफलाइन। चलो नेक्स्ट कोई क्विज है क्या? मौज मस्ती भरी टैलेंट। यार कोई मैजिक वैजिक सिखाओ यार हमको। हाँ कोई मैजिक सिखा नहीं रहा। ऐड ओ ये क्या है? अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या? I should show लॉर्ड Deke. जॉर्ड बे यूज इंटरनेट फॉर डिक। I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? थैंक यू You डिक। will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. थैंक यू डिक। Thank you for your help, Deke. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Never mind. Actually, perhaps another time. चैलेंज कंप्लीट होने के बाद क्या? बोल तो है काम अपने पास। वो तो ले चाहिए मुझे। एक साथ ज्यादा नहीं कर रहे हो क्या? 15-15 सेकंड का गैप अप क्यों? Thank you for the coming to stream by Jobin Nair. Thank you. चलो अभी के लिए इतने काफी है। Professor Howard will never believe this. Thank you. Hi, buddy. इसके लिए 18 मिनट का टाइमर ले भैया। हो गया बे।
थैंक यू। मतलब यहाँ पे अपन और ज्यादा जानवर पकड़ के ला सकते हैं ना, अपना एरिया ही है। एरिया तो काफी अच्छा है। बाय बाय, खुश रहना। ओके Potato! Dick thinks you should be proud. मुझे मैप में जानना है कि ये जो जगह है ये है कौन सी। Potions you've brewed. अब क्या करना है मुझे? अब क्विस्ट सेबेस्टियन, ये देखो इसको ढूंढ रहा हूँ मैं कब से। इधर है सेबेस्टियन, लौंडा। और झाड़ू निकालो भाई, चलो भागते हैं यहाँ से। यहाँ पे लेके चल मुझे, भागो, बहुत दूर जाना है। मजा आएगा। उड़ने के लिए सब रेडी रहना। क्या 1000 मीटर अपन निकलने आ रहे लॉर्ड ऑफ शॉट। 1000 मीटर जाना है अपने को। इतना दूर काय को लेके जा रही है अपने को, वही समझ में आ रहा। वन 1000 मीटर दूर इनको करना क्या है? बेटे 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 ऑलमोस्ट खत्म हो जाता, डेड हो जाता। 700 मीटर। इससे मैंने लॉन्च क्या है भाई? अरे यहाँ पे शील्ड है। नीचे चल नीचे चल नीचे चल भाई, नीचे। वो क्या था भाई? मेरे नाम का बदला क्यों ले रहे हो सब? चलो भाई साहब, किधर जाने का है? इधर क्यों रुकना है भाई? F for wait. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. ये लौंडा है वो। Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there, Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them, possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us, which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. मतलब कुछ भी कर लो तुम, सॉरी के अलावा I'll take you to my uncle's. लौंडे, तेरे को काल कितना ढूंढा है, कुछ आता पता है तेरे को? Feldcroft used to be a lot livelier.
With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Enter the shallow home. चलो घर के अंदर. कुछ 360 व्यू है क्या? Sebastian, where did you? Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. अपन और लाएंगे. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. अबे यार. But we haven't tried everything. There is no cure. ओ भाई सब लौंडा बहुत When चिड़ा will you हुआ है सब accept आपका. that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. इसको हुआ क्या? I'm sorry you had to see that. Please, If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. कहाँ है? अंदर है क्या? That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. Good day, uncle. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Okay, आराम कर दूं. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. पता तो चले वो चूतिया ऐसा क्या कर रहा है. Sebastian. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry.
He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Okay. This way. चलो फिर. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. What was that? I won't rest. Why don't you come up here? आजा. कौन आ रहा है? और कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? और कोई? इसकी भैंस की टांग मारूं. डिफेंड हो गया ना भाई? डिफेंड हो गया ना? अभी आके बताओ. आगे 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 बताओ भाई क्या करना है. ठीक है. 5 रुपए के लिए तुम्हारी भैंस था. एक बच्चा है वो, उसकी तो बजा क्या तेरे को. मेरे पास वो कहाँ गया वो? Incendio! Quiet it, jobbing. You've made your last mistake. लगा ही था. कोई ना कोई बच्चा ही होगा. आ रहा हूँ रुक. You will regret coming here. I've never seen a sword like it. अबे ये इतने सारे कैसे हो गए बे? ओके आन दो. सबके घाप में उंगली करेगा मेरे को. You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम लोगों को मारने में. बट मारूंगा जरूर मैं. You should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. Over here! आजा बेटा चल. तू वैसे भी नहीं मानेगा. Let's get this over. You cool. How nice of you to stop by. Get away! You almost had a lucky shot. अबे You're weak, human. Almost. वो बेटे You're making this too easy. Let's try. Is that it? You are fucking me. Rather a boy's coming back. अबे मैं डिफेंड क्यों कर रहा? Just you wait till I'm on solid अबे साला. Incendio!
अबे Was that your best? Kill spell jobs off of me. और कौन है? You can't stop us. I've been fighting since before you were. Diverted. Pity. Not right. अबे बेटे ऑलमोस्ट उड़ा दिया था अभी मेरे को. That was meant for me. Not quite. आ जा बेटा. और कोई? I confess. इसकी That was a bit more than I'd bargained I for. confess इसकी तो I साला tried to सबसे ज्यादा तो warn you. मैंने मारे हैं. वापस किसी ने कुछ कहा ना तो रिपेयर भी कर दूंगा यहाँ पे. वाइट कितने सारे मारे चले गए. क्या हुआ? Those loyalists फट गई. deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, यार एक बंदा an सब्सक्राइब icy कर देगा voice 310 drifted हो out from जाएगा. somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. यहाँ पे क्या है? ढूंढ क्या रहा है? Whose home was this? Bit abandoned long since. Revelio. Hogwarts professor was sent. I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. भाई जितना था उतना तो क्लू ढूंढ लिया. अब यहाँ पे क्या? Revelio. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. Oh This my house, God. the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks Revelio. as though this was intentional. Talk to Sebastian. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well.
the girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. A stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Seems these journal entries are from Isadora's travels. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Explore क्या करना है खत्म हो गई है. Revelio. Maybe fire. Incendio. अबे फायर से नहीं हो रहा. Incendio. जल जा. नहीं जल रहा वो. लॉल. ये जरूर जल गया. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? मुझे Hogwarts A दिख रहा है. daydream? Because that happens to me too. ले भैया. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. एक सेकंड. तू कैसे वहाँ पीछे क्या कर रहा था भाई? Enter the. हाँ बिल्कुल भाई हमको शौक है भाई. हमको शौक है ऐसी चीजों का. हम 100% अंदर जाएंगे. फिर भी एक बंदा भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा मेरे को. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing.
A note. Let's have a look. Incendio. Anything helpful in the note? No. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. अब क्या करना है? Till then. Revelio. अबे इसने तो कुछ नहीं सिखाया आलोक भाई, क्या यार? सिखाया छोड़ो, अपने 2 हेल्थ के बाहर इसने उड़ा दिया है। थोड़ा अपने को क्लास में जाना है। तो हाय की हाई की कहाँ पे? किधर 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 किधर? Think about that. लग तो यही रहा है। ये ऊपर है। मुझे बताओ इसको ट्रैक कैसे करना है? ऊपर है। हाय लॉन्डो। अबे ले लो पैसा। निक बट सिर कटे निक। I've always said that travel broadens the mind. Okay, thank you. Hello. कौन सी क्लास है अपनी फिर अभी? Let's start class. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Adventure तो काफी सही था। Ladies, Professor Shah. वाह। astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. हाँ। Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck.
वो ये वाली क्लास अपन ने तो हॉगवर्ट्स में भी नहीं देखी थी। अरे नहीं, ये वाली जगह पता है मुझे, प्रोफेसर डम्बलडोर को यही चाहिए You था। can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. प्रोफेसर डम्बलडोर को यही चाहिए पा गया था। Here, I can adjust that for No, you. no, bring No, it no, into no, no. focus on Bring your it into the own. focus. साला बुड्ढी बहुत स्ट्रिक्ट है। ये क्या? अबे बेटी, ये किस तरह का फोकस है भाई? Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. प्रोफेसर, क्लास का मतलब क्या था जरा बताना मुझे। Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? ले भैया, I have a spare one you could borrow for the rest of term. Thank you for... That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Okay, इसी बारे में बात करनी है तेरे को, ठीक है? बात करेंगे हम, बाद में बात करेंगे, okay? Tried to put off my stargazing as long as I could. The constellations are beautiful. मुझे भी I'm देखना not है। sure they're worth dying of a cold for, but यार मुझे देखने दो they ना। are beautiful. Amit thinks he knows everything. I had heard about these odd stone tables. Not sure what you can learn from these astronomy tables. Tried to put off my stargazing as long as I could. Lot of good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? ये क्या है? This was his old telescope. ये telescope That's practically brand new. Confringo! ये है ना बात। Okay, complete. ये thank you. Telescope मिल तो गया अपने को। A pristine night for star. ए रुको, telescope कैसे यूज करना है मेरे को बता। टेलीस्कोप यूज ही करेगा ना, पता नहीं अपने को। और कितने दिन चले वाला है, कंप्लीट कितने दिनों में का उस पे डिपेंडेड है ना अलग भाई, कंप्लीट पे डिपेंडेड है। The perfect night for... Oh, I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise.
No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? You won't regret it. भाई साहब बहुत कम हो गए व्यूज, बाल व्यूज कम हो गए यार। The table is on the castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. पहले मैंने ढूंढा, डाउनलोड अवेलेबल है क्या देखा, फिर मैंने It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Where is table? Why? Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. क्योंकि मैं उसकी स्टोरी थोड़ी Actually, that's all I wanted to know. मतलब ट्रेलर थोड़ा सा मतलब देखते ना कैसा गेम है, वैसा देख के आया मैं। फाइंड क्या गाफ में घुस जाऊँ हाँ, हर बार मेरे बले को पकड़। A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. ठीक है, thank you. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. तो अबे आगे जाना कहाँ है और करना क्या है? मौज मस्ती मेरी नीचे से जाने का। नानी मानू नानी ये ना 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 ना, आसमां को छू कर देखा, तारों की गली जमारी चांद। ए रुक रुक रुक, रिटर्न टू क्वेस्ट एरिया। क्यों भाई मैं उड़ नहीं सकता क्या? अरे बेटे कौन सी घटिया जगह बैठ गया मैं यार। यूज द क्या यूज करने को कह रहा है ये? इसका यूज क्या है क्या नहीं कुछ है इसके तो यार, एक तो मिल नहीं रहा, ऊपर से यूज कह रहा है तो Incendiary. ओके तो ये उठ सकता है क्या? तो ऐसा बोला ना यार तुम लोग, अपन फोड़ देगा ना सब कुछ। धरती सारे हाँ क्या? मैं इसके अंदर गया, ओके देन इसके अंदर गया, और यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है। I can't believe that. You don't think any spiders might be lurking about? ये रहा। Oh no! Look, not there's this a close table. to school, Amit. I think you should do the honors. Go ahead, try it out. Use the
अबे कैसे यूज करूं? The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. बेटा तू कैसे करेगा? W for zoom. मुझे कुछ तारे दिखाई भी नहीं दे रहे. Stargazing is all about patience and precision. लॉजिक है. हाँ. लियो बेटा लियो. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, 𝐥𝐤𝐤𝐞. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Challenge unlocked. Okay, find the astronomy table. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. तो अभी क्या हो गया? बस इतना ही था. और होंगे ना टेबल? नहीं, अच्छा. तभी तो सोचूं. भाई मैंने असिस्टेंट क्रेड वाला लगे टाइम कितना टाइम खा गया था मेरा वो. तेरे को तेरी भैंस की टाइम. वाह, मेरे पास झाड़ू और मैं यहाँ से घूमता हूँ. You can enter with चांद पर नचो. नीचे उतर तो जरा. Alohomora. Alohomora. Incendio. Confringo. मूर्ति को कुछ तो अर्थ है. असिस्टेंट किड तो पसंद ही नहीं मुझे. अच्छा, that's why reason. That's why reason असिस्टेंट किड हम आप नहीं. आप आई थिंक सो है ना. आप क्या कहते हैं उसको? क्या रे, कौन सा गेम था वो यार? अनचेंटेड लेगेसी के टाइम आई थिंक सो अब आए थे. मैप पे जाके मुझे देखना पड़ेगा. रुको.
Speak with Sebastian. Sebastian से मिलने चलते हैं, चलो. वैसे भी अपने को कुछ सिखाने वाला था ना. Sebastian लौंडा किधर है? अंदर घूम रहे थे उसकी तो. Sebastian. टाइम आया था मैं. हाँ वही तो बोला मैं. उसी टाइम तुम आए थे. और उसके बाद ही मेरा चैनल ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है. How nice to see you, my young friend. और अभी रुक भी है. चैनल की ग्रोथ रुक गई है यार. बहुत बुरा लग रहा है पता है. 2 दिन ग्रोथ होती है, तीसरे दिन चैनल फ्रीज हो जाता है. मतलब फ्रीज नहीं, फ्रीज की बात नहीं है वो. समझ जा. ऐसा ही चलता रहा तो भाई मैं तो लुट जाऊंगा. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. अरे ओ चीचा. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. बात कर भाई. I won't give up. मैं तेरे से मिलने. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The GamePlays know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting us on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me, and more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. इसने क्या कहा? सेबेस्टियन, अबे लौंडा, अबे लौंडा दीवार के ऊपर हो गया. Use the map folding cover. जहाँ पे ये क्या है? Friend Professor Problem August and Problem around quiz. ये पॉप बलून आई थिंक सो वही है ना? जहाँ तक मुझे याद है पॉप बलून आई थिंक सो वही है.
पानी के साथ और पानी के बाद सिर्फ यार नाम रहेगा हॉगवर्ट्स का यार। कौन है यहाँ पे? उतर तो यहाँ पे इसको ढूंढना है अपने को। इससे अच्छा दीवार के उस पार ही उतर जाता मैं। अबे तो स्टेशन है, स्टेशन में क्या प्रॉब्लम होगा? यहाँ पे क्या करना है? And I'm grateful for the opportunity, ever so. Come on, then. What you got? It's Why is it moving? What? I bet... Your bag, it's wriggling. What you got in there? Not rat. Revelio. What will you do, man? अच्छा ये रहा ऊपर ऊपर। ओके तो अगर मैं ऐसे जाऊं ऐसे कुछ होगा, बट ये तो दो ही थे। हाँ ना पता है मुझे। और का है और का है और एक और एक और एक। और एक होना चाहिए ना। यार एक तो इन लोगों ने नहीं, कैमरा भी सबसे घटिया गया है इसका। नीचे का और ऊपर का कुछ दिखता ही नहीं है इसमें। हाँ नीचे का व्यू दिखे ना ना ऊपर का व्यू दिखेगा। हॉगवर्ट्स स्टेशन के आसपास 5 है, अपने को मिले 4 है। यार एक कहाँ पे हो सकता है? और एक कहाँ पे हो सकता है? और एक वो रहा साला। भाई ये अलग है। लो कर लो बात। अबे बेटे एक बलून में फूटा जा रहा तेरे से, क्या झाड़ू पे उड़ेगा तू? लो ये तो कुछ अलग ही मिल गया। वो रहा तो बाकी के उधर 5।
बकचोदी है ये व्यू चाहिए अपने को फुल जोर से और जोर से भाई अपन झाड़ू चलाने में माहिर हो चुके हैं बोला अपन झाड़ू चलाने में माहिर हो चुके हैं हो जाएंगे और थोड़ा सा बट अभी फिलहाल के लिए तो हो चुके हैं ना देखा इससे कट कुट मारने की सीधा ये रे 5 इनको 5 फोड़ने का बस और क्या ऊपर और ये रहा हो गया और एक देखा था मैंने अबे बेटे और तरफ फायदा होने में भी अच्छा लगा Brilliant. और कुछ तो मिला अपने को बचपन से आदत नहीं हुई मेरी अरे बेटा तू Revelio. मुझे बाहर से जाना है पक्का शोर है कहाँ से अंदर जाने को कह रहा है ये अच्छा How did you get on with those tasks? Madam 𝐥𝐤𝐤𝐤, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? I did. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. 𝐥𝐤𝐤𝐤. Pay attention to your wand work. नया मैजिक रुको नया मैजिक सिखा रहा है वो एक सेकंड भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है स्पेस राइट क्लिक स्पेस हो गया फर्स्ट क्लिक ठीक है स्पेस को दबाएं ये क्या है इसका मतलब अभी बताओ मेरे को Well done. Well done. I'd recommend that you practice your new spell Hello, here in Homora. my office before putting it out into the world. फिलहाल तो मैं तुम्हारे पे एक ताला तोड़ रहा हूँ बुरा मत मानना ओके अरे हाँ तुम्हारा वो यूज करना है ना There you go. Catching them quickly. Wow. Nice वे अगर मैं तेरे को उड़ा दूँ तो लॉल और जॉट Incendiary is a bit lesson, but do continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. आगे बताओ क्या करना है अपने को वो जो मेरा क्विस्ट अनलॉक है वो कैसे कंप्लीट होगा रिक्वायर्ड लेवल 17 अपनी लेवल कितनी रहा अबे लेवल 18 है मेरी गधो कुछ ज्यादा है क्या
बहुत कुछ मिला यार मुझे, बट किसी काम का नहीं है। अभी जो मेरे पास सूट है वो भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, अभी मुझे जो मिला था वो भी बढ़िया है, ये बढ़िया है। ठीक है चलो, यहाँ पे क्या मिला है? अरे वाह भाई वाह, झाड़ू मिला। तो कोई यहाँ पे कुछ और है? इन्वेंटरी में क्या क्या आया नया? 2 लेटर आया है, टैलेंट बढ़ा है 1, और मुझे टैलेंट चाहिए है स्पेल। उड़ने के लिए नहीं चाहिए मुझे, डार्क ये भी नहीं चाहिए। कोर कोर में भी क्या काम का है वो? स्ट्रेंथ काम की है। कलेक्शन में छोड़ा यार। अब क्या हुआ भाई गेयर अप में? ठीक है चलो, झाड़ू की दुकान में जाने का मेरे को। तेरा क्या भाई, कौन प्रॉब्लम है क्या? Hello, Samantha. Are you here for someone as caught? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until. Never mind. Shall we begin? I'm ready. Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. I'm also ready. My brother's doing well, thanks to you. And he listens to me now. Turns out having beats for feet. Accio! अच्छा, अब भी उड़ाता हूँ, रुक मैं तेरे को। Yes! अब भी उड़ाता हूँ, रुक मैं तेरे को। Accio! उड़ा 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 उड़ा, ये। That was sensational. Accio! मेरे से पंगा मत ले, आप बहुत डेंजर है। What was I thinking? 0 पॉइंट है उसके। यार, छोड़ना तो मुझे। You have to do better than that. Accio! लग गया बेटा। वैसे भी मैं अभी भी उससे आगे ही हूँ, इतना पीछे नहीं हूँ। पर ठीक है चलो, कोई बात नहीं। Accio! चल, क्या बोलने का? क्या बोल? How am I to top that? That settles it then. Similar winner by winner chicken draw. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. You played well. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck.
मेरे पास जो झाड़ू को मिला ना वो मुझे लेके जाना है, तो मुझे ज़रा हॉगवर्ट्स में भेजो। एंड दुकान कौन सी है? मे भी यही दुकान हो तो अच्छा रहेगा, यही वाली दुकान हो तो अच्छा रहेगा। Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Glad you came. ये वाली वो जगह नहीं गया। वो झाड़ू को दुकानदार कहाँ पे है? वो झाड़ू की दुकान कहाँ पे है? Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. A wise decision. Thank you. कुछ लोगे क्या? बहुत कुछ लेके घूम रहा हूँ मैं। पैसा बहुत है अपने पास। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू। I hope to see you again. Farewell for now. हाँ ठीक है, मिलेंगे बाद में मिलेंगे। अबे वो झाड़ू की दुकान कहाँ है इसकी? तो कहाँ है वो झाड़ू की दुकान यार? ये वाली एक दुकान जाके चेक करनी पड़ेगा लगता है मेरे को। मेरे ग्राफिक्स को क्या हुआ भाई? ये नहीं है यार वो। क्या लगता है कौन सी दुकान थी उसकी? ये वाली। उसका नाम कुछ पॉपी था, पॉपी। यार कहाँ मिला था मैं उसे? होगी तो इन्हीं किसी में से एक होगी, मुझे अच्छे से पता है। ये पोशन वाला है यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं। लियो पॉपी तो नहीं है यहाँ पे। यार मुझे किसी करके ताला खोलने कहाँ मिलेगा यार वो पॉपी? पोशंस पे यार क्या उस गधे की दुकान? Glad Clementine's finally lost her obsession. लग तो यही रही है। अबे बेटे। Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching.
तू नहीं है यार, वो मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो तू नहीं है। तेरे पास आइटम बहुत बढ़िया बढ़िया है, but thank you, no thank you. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. तू नहीं है वो, कहाँ गया वो गधा? Bobby, where are you? Got nips in the hat, if you please. कहाँ होगा उसका दुकान यार? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hello. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracell feather, it doesn't half hurt. इसको मैं ले सकता हूँ क्या? Hello. Oh, welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Duracell feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Duracells, but people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. Sounds. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose. The cry in those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but add it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? क्या है भाई? ये क्या है? तो ये क्या है? अच्छा, इतना महंगा? हाँ, थोड़ा सस्ता नहीं है क्या? नहीं चाहिए, thank you. Bye. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. तो क्या? I shan't be standing for any threatening behaviour. I can tell you that. अरे वाह, तू भी है? तो मैंने और किस को नहीं देखा? ओह माय गॉड, इसको भी पकड़ना है मुझे? पक्का तेरे को पकड़ना है? तूने बहुत मारा था मेरे को। और कौन कौन है तेरे पास? छोड़ो।
मैं उसकी भैंस की टांग मारूं। किसी के घर में घुसना गलत बात है। Hogsmeade, here I come. मेरा बाल। मेरा बाल। My father always taught me. अबे यार। Mind you. कोई बताएगा वो साला वो कहाँ गया? I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. Pop! अबे इसकी तो What are we looking for today? साले मैं तेरे को कब से ढूंढ रहा था। तेरे पास वो चीज ही नहीं है। मुझे लगा तेरे पास आएगी क्या। Thanks for stopping by. Hope to see you again. वैसे जो मैप में दिख रहा है ये है कहाँ पे? इस एंगल में। ओरे बेटा ये तो किधर है? क्या है? You must have learned start. इसमें जाके कौन सा कहा उसने? मेरे को किसी ने चिट्ठी भेजी ना? प्रोफेसर maybe. Professor, where are you? I'm coming for you, Doctor. Upgrade high speed. प्रोफेसर के पास चलते रुको। प्रोफेसर के पास छोड़ो, यहाँ पे भी बहुत सारे क्विस्ट ओपन हुए हैं, तो इनमें से किसी पे चलेगा? चलो, क्या पता कुछ और क्लासिक हो जाए। Glad you came. क्या हुआ? Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find 𝐥𝐤𝐤𝐞? I speak him with him. I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. मेरा कोई Your plan नहीं owl होता। mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of 𝐥𝐤𝐤𝐞 potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. I will try. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. One second, बहुत जोर की गुचकी लगी मेरे को। ठीक है, सब गुचकी लगी है। मैं झाड़ू।
अब भाई कितना दूर तक 300 मीटर चलाओगे क्या मेरे को? अच्छा मैं गाँव के अंदर हूँ क्या? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. अबे उड़ जा मेरे भाई। उड़ जा यार अब तो। रुको भाई मेरे को गुस्की आ रहे हैं। The castle must have been quite stately in its time. Ah, Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Not sure how I'd fare. Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Excuse me, did you... Excuse me, did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rockwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Hope they know what they're doing. This could prove dangerous if I'm not careful. These rocks have seen better days. I know a Merlin trial when I see one. Confringo! उसने क्या किया इधर है? I think so fire ही जलाया था मैंने. Incendio! Habibi, come to Dubai. हो गया ना अभी यार. 30 लोगों को ठोकना भी है ना वहाँ पे. तो रुको पहले थोड़ा सा तैयारी कर लेता हूँ मैं. Let's go.
डैमेज। अरे हाँ, ये भी तो एक है ना अपने पास। Expelliarmus! Confringo! Is that Infurious wearing a wooden jumper? That must be Bardo. Confringo! Incendio! Confringo! Incendio! Expelliarmus! यहाँ पे क्या ना डिस्कवर वेट अप एंड क्या अपडेट होता है यहाँ पे बचा हुआ है क्या? Incendio! Bardo's wooden jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. कितना पिएगा बस कर भाई। मुझे रुको ना, एक तोता चाहिए था। I'm not going to hurt you. तोता नहीं क्या और तोते? ये रहा। अबे रुक, तो वो वाला लेते आप। आजा। Everything's all right now. भागो भागो भागो। नॉट इस बात के लिए नॉट भाई, मैं तो जाऊंगा भाई। Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? I do hope my brother is all right. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. I'm simply at my wit's end. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. This is our home. I remember you. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. अबे नाइट बॉट One less human to worry about. आजा, इन सबको फोड़ते हैं आराम से। पहले ना 2-4 को तो ऐसे उड़ाते हैं। One of Ranrock's camps. It
exactly as Madame Beaumont described. हाँ पता है मेरे को. Wizards are running scared, as they should be. Petrificus totalis. Grapple you are. You will regret coming here. How nice of you to stop by. Such arrogance. अबे इतने सारे कैसे हो गए ये अचानक से? Petrificus totalis. हर बार तुम लोगों से लड़ने के लिए पागल नहीं चलने के लिए. Ranrock has fooled you all to your demise. आए बड़े One मुझसे camp down, लड़ने वाले. one more to go. ये लोग करते क्या है भाई यहाँ पे आके? Clear the goblin comment. अच्छा ये क्लियर करने का. चलो फिर करते क्लियर. One less human to worry about. सबके गाफ में आग लगाएंगे आप. Wizard kind will submit to us once the war is over. Petrificus totalis. अच्छी बात है. पहले उसको भी उड़ाता देखो. कहाँ गया वो? अब तेरी. The wizards will be defeated. Hello? आजा आजा आजा. सबके गाफ में आग लगा के चुपचाप हो गई. Petrificus totalis. What was that? You will regret coming here. Wait, someone's afraid to fight. Let's get this over. Someone there. भाग भाग भाग. Fight about as well as a know you're here somewhere. बेटा सबकी गाफ में आग लगाऊंगा मैं. टेंशन मत लो. आएगा आएगा सबका टाइम आएगा. अभी जो छोड़े हो क्या आ रहा है ना आगे. Seems the coward fled. Wise decision running from me. Petrificus totalis. सबकी गाफ में आग लगाऊंगा. आप टेंशन मत लो. आ रहे सब आ रहे वापस आ रहे. अंदो अच्छा बेटा. पीछे पीछे जाएगा क्या? You will regret coming. बेटा I'll find you. Rather a wise back this way.
कोई तो घूम रहा है ना, उसको पकड़ते रुको। और कौन घूम रहा है? चल निकल। उड़ाएंगे सबको, उड़ाएंगे, अपन टेंशन मत लो। मैं मैप में देख के चलता हूँ कि उन लोगों का ध्यान किस तरफ है, उस हिसाब से। चल निकलो, दोनों के दोनों निकलो, चलो भागो। अब तेरी बारी। One of the best meals I've ever eaten. अब तेरी बारी। चल निकल बेटा। Your blood's on Ranrock's hands. Both camps cleared. Madam Beaumont will be glad to hear that. Let's go. Who lived here, I wonder? Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? I remember you. Your generosity helped me. Hi. I do hope my brother is all right. Hello. Hello, Madam Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? Yes, ma'am. मैंने clear कर दिया. It was harrowing, and they dug in their heels, but I managed. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. Maybe I see where. What do you have for sale? What are you looking for? Thank you. Sincerely. Oh, I do hope my brother is all right. Thank you for passing through. ₹10 की टिप तो दे ही सकते हैं, इतना कंजूसी भी अच्छी बात नहीं है। Revelio. खोलो क्या? Alohomora. 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 ये क्या है? अबे दोनों मेल फीमेल लॉर्ड पे क्या करेंगे? ब्रीडिंग कराएंगे क्या?
कोई मिशन बताओ यार। क्विस्ट ट्विस्ट कहाँ गए मेरे? क्विस्ट काम नहीं आ रही क्या? ये लॉक क्यों है? ये लॉक क्यों है यार? चलो आ जाके देख क्या थे। You cannot enter our रे बेटा, ऐसा क्यों? अब कम से कम टेलीपोर्ट तो हो पाऊंगा ना। I should come back to this another time. नेक्स्ट टाइम के लिए। You must learn. Leave your cell before. I don't think I can do this now. Best to come back. लियोसा क्या कह रहा है? कौन सा क्विस्ट है भैया? क्या है भैया? देखना पड़ेगा क्या है भैया? I don't think I'm ready for this just yet. ले उड़ ही नहीं सकता अभी। वापस पीछे जाना पड़ेगा 400 मीटर। This place has seen better days. Put the back. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Spock? I do hope my इसके पास brother वापस is क्यों भेजा all right. आपने को? क्या करना है? Madam Beaumont, I believe I have some news of your brother. Adolf, what do you know of my brother? I regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No, this can't be. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madam Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph! Bardolph, my dear, dear brother. Chips in the hat, if you please. I remember you. Bardolph, you wouldn't have left without saying goodbye, would you? Thank you for passing through. क्या करना क्या है? यार रुको मैं ना, मुझे कॉल आ रहा है। Just wait a second. I'm coming now, guys. 5 मिनट का ब्रेक दो यार मेरे को। 5 मिनट में आए।
चलो बैक टू द गेम। बहुत बकचोदियों को स्ट्रीम करता हूँ कि क्या करता हूँ कभी कभी समझ में नहीं आता मुझे। सुख शांति समृद्धि तीनों एक साथ मिल जाए तो स्वर्ग जमीन पे आ जाएगा। What are you up to now? किधर हूँ मैं? गरुड़ाश्व। लगा ही था। सांप स्नेप है क्या? ये लग गई तो इसके तो इक्वेशन देता है साला। खुद को समझ के क्या रखा है इसने? Revelio. Alohomora. 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 क्या बेटे अब छीब है। Revelio. कुछ तो था अभी अभी। पेंग 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 पेंग। Incendio. ये क्या है? इवेंट पे जाने का है क्या? चलो इवेंट पे चलते हैं। पता तो चले क्या है उधर। क्या क्या दिल क्या करे कब किसी को प्यार। ठीक क्या गाना गे रहा हो? चीप गाना था एकदम। अबे तो स्पीड टेस्टर है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे को इसमें। अगर क्विडिच हो तो बताओ, अपन जरूर खेलेगा। क्विडिच हो तो बताओ, क्विडिच हो तो बताओ। क्विडिच क्विडिच क्विडिच। अरे वाह, अरे हाँ इनको छोड़ना भी था ना अपने को। रुक जा भाई। कौन है यहाँ पर?
Betting on the dragon fight was the best decision जो लोग I've हैं made क्या? yet. Ah, but a purse made a unicorn. किधर हूँ मैं? मुझे इसके पास जाने का। That fetches a few galleons. Peaceful things, skinned and eaten. क्या पता कुछ मिल जाए अपने को काम का। कुछ मिला तो नहीं बट ठीक है चलो। रुक 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 अबे रुक। कौन है यहाँ पे? Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and rightfully so. ये तो यहाँ से चले गए। रुको यार। ठीक है चलो इतना भी चले। I may go to Hogsmeade later, stir up some trouble. They need to be reminded that we're still running things. How did I get mixed up in this? Doing Rookwood's work for him? It's been a bit. I know I'm not doing things. कहाँ गया वो? रुक तेरे को मैं करता हूँ ना। Let's finish this job and be done with it. Waste of time, this is. Okay. मैं कुछ हेल्प करूँ क्या? I've raided Brockborough. Well, if you weren't so forgetful, we'd probably have more, wouldn't we? Can never have too many sacks, my friend. Petrificus totalis. Thank you. I didn't believe I defeated an Ashwinder by myself. बहुत परेशान करते तुम लोग। अब जाकर किसी को ढूंढता हूँ मैं। सिर्फ एक है क्या? मेल फीमेल दोनों है। Do cooperate, won't you? वो किधर गई?
पकड़। अबे यार। I'm only trying to help. आजा। Good choice. I'll look after you. और एक कहाँ है वो? वो रहा। आजा। गुड बॉय। और क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे भी है। किधर है वो? नीचे गई। रुक अब रुक रुक रुक। बे रुकना। भाई कौन से जंगल में घूम रहा हूँ मैं? ये क्या है? अच्छा यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। इनको पकड़ चुका ना? आई थिंक सो। मैं आई थिंक सो। बट क्या कर सकता अभी? Settle yourself. I mean, you know. इनको पकड़ चुका हो यार। ये नहीं चाहिए मेरे को। कोई नया नया है क्या नया? मैं यहाँ पे हूँ। अब क्या ले? नीट सोल वाइटी। यार याद नहीं आ रहा मेरे को कौन हो तुम। बट हाल बहुत बढ़िया है। इतना बढ़िया है कि कहने पे क्या। ठीक ठाक ही है भाई। जिंदा वो बहुत है। वैसे मेरे को याद नहीं आ रहा है तुम कौन हो। नाम बताओ नाम बताओ नाम बताओ। थोड़ा बहुत मतलब पबजी प्लेयर हो, इन रियल लाइफ हो, नाम बता दे मेरे को आ जाएगा याद। वैसे निकला तो मैं फिलहाल शिकार पे हूँ। ढूंढ रहा हूँ मैं कुछ लोगों को। ये क्या है? अबे ये लोग भी है मेरे पास। बट इसको पकड़ लेता हूँ क्या? आजा। सोल। Not going to hurt you. सौरभ सौरभ। अबे सौरभ सौरभ। अच्छा तू है क्या? बोल भाई कैसा है? मेरा चैनल तेरे पास था या नहीं था या ऐसे मिल गया? मैं क्या कर रहा था? हाँ मुझे घर जाना था वापस। बहुत घूम लिया मैं यहाँ पे। वापस जाना था मुझे। यही कहीं पे मेरा वो ये है सीक्रेट रूम। सौरभ भाई कैसे हो? थैंक यू फॉर द काइंड स्ट्रीम। कहाँ पे हूँ मैं? I've always said that travel broadens the mind. ए पागल, मेरे को नीचे जाना था यार। ये रहा मेरी जगह।
मेरा स्पेशल रूम में छोड़ो भाई मेरे को। हॉगवर्ट्स लेगेसी चल रहा है अपना तो बढ़िया ब्रो। डीक साला। I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Never mind. Actually, perhaps another time. ऊपर कोई तो घूम रहा था बेबे। Dick thinks you should be proud of the potions you've brewed. मैं कुछ लेके आया हूँ, उनको छोड़ देता हूँ ना। अबे मेरे वाले कहाँ गए? हाय। मेरे वालों को भी छोड़ देता हूँ। आइए खुश रहना, ओके? सबको मालिश मिलेगी, सबको सबको सबको। तू भी आ। और कोई बचा है क्या? और कोई बचा है क्या? सबको खाना भी मिलेगा, टेंशन मत लो। खाना ले ले। अच्छा तू पहले मालिश ले। तू भी खाना ले ले। खाना ले ले। आइए। और कुछ का बचा कुछ? थैंक यू। बहुत कुछ मिला है अपने को। तेरा क्या बचा है? अरे भाई तेरे को कुछ नहीं किया यार, सॉरी ब्रो। F2 कलेक्ट। तेरे को खाना नहीं दिया क्या? तेरे को भी नहीं दिया? ये ले। तेरे को ले ले। तेरा क्या है? F थैंक यू। तेरा क्या है? हो गया तेरा? तेरा बचा क्या? ओके सब अपने ही है। ओके तुम लोग कहाँ घूम रहे हो रे? ये देखो इतना दूर आ गया। ले खाना भी खा ले। कहाँ जा रहा है? ये ले खाना खा। अरे बढ़िया बढ़िया। सबको खाना वाना खिलाओ। और कोई बचा है क्या? तू इतना दूर कर क्या रहा है? इतना दूर दूर मत रहा कर यार। सब उधर घूम रहे हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? आए बड़ी। अबे भाई सब कैसे देख रहे हो मेरे को? F2 कलेक्ट। अच्छा तेरा कलेक्ट बचा था क्या? तेरा एफिशिएंट तेरा। और कौन कौन है भाई? और कौन कौन बचा है? सब हो गए ना? अच्छा तू बचाएगा। थैंक यू। तू भी बचाएगा? अरे तेरे को नहीं दिया? अरे रुक जा। तू दे दे तब तक मैं उसको खाना वाना खिलाता हूँ। आजा। ले खाना खा। और कोई बचा है क्या? ये तो आराम से खा तब तक मैं देख के। कौन कौन बचा है? ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। ये दोनों नोटी नोटी चीजें नहीं चढ़ने के यहीं पे बोल दे रहा हूँ। तेरा भी हो गया। सबको हो गया। ऑलमोस्ट हो गया। अभी बस उससे जाके कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। एक काम आकर रुक। बाय। घूमो अच्छे से। ओके ये जगह क्या है? जगह बढ़िया है अपने लौंडे का।
वो उन गधों को भी पकड़ के लाना है ना यार, उनको भी तो लाना है पकड़ के। चलो आराम से मजे करो। मैं आया। ये क्या है? अच्छा हाय, चलो हाय डिक, डिक ब्रो। Dick thinks you should be proud of all कुछ the है? potions you've Nothing to identify, आई for now तेरी at least. तो कहाँ है वो मेरा? ये कहाँ पे है? इधर 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 है। 48 38 32। रुको पहले अपना गेयर अप कर लेता हूँ मैं, सब कुछ भेज देता हूँ, देन अपग्रेडेशन चलेगा अपना। ओके ये कुछ नहीं है। चश्मे में क्या है अपने पास? देन तो निकल, थैंक यू। टोपी में, टोपी एक ही है। स्वेट शर्ट में कुछ नया नहीं है, सबको बेच दो। Destroy, 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 destroy. एंड इसमें क्या? कुछ नहीं है। एंड इसमें भी कुछ नहीं है। इसको अपग्रेड कर सकते हैं अपन। छोड़ो यार, अच्छा खासा मिलेगा तभी अपग्रेड करेंगे, कुछ बढ़िया मिलेगा तभी अपन अपग्रेड करेंगे। ओके किधर? अब आ जा। कुछ नहीं है क्या अपने पास? 3 का तो बड़ा आइटम है ये। इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं आप। सो किससे अपग्रेड करना है इसको? ये नहीं मिला अभी तक अपने को। फेदर मिल चुके हैं तो ये भी नहीं मिला है। ओके और क्या क्या है अपने पास? छड़ी मिली है आई थिंक सो। मुझे ये वाली ठीक है, चलो वाइट वाली यूज करते अपन। एंड और क्या क्या है? टैलेंट, सारे टैलेंट। एक टैलेंट मिला है क्या? ओके डार्क, चलो डार्क में कुछ ले लेते हैं यार, क्या कर सकते हैं अभी। कलेक्शन में बहुत कुछ आया होगा। कलेक्शन में कुछ नहीं है। इसमें क्या क्या है? और कुछ अब क्या बचा है भाई? और 1 2 3 4 बचे ना, और 4 लेके आएंगे अपन को। और 4 चाहिए अपने को। यार ये झाड़ू यूज क्यों नहीं कर पा रहा मैं? Why not I'm using this? Why not? और क्या क्या मिला भाई मुझे इसका? ठीक है चलो इतना भी ठीक है। 20% चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। कुछ ना कुछ मिला है अपने को। और कुछ क्या मिला क्या? नहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। हैट मिल गया, थैंक यू। हैट चाहिए थी मुझे। और क्या है भाई इसमें? क्या मिला भाई मुझे? कुछ मिला है क्या? ये क्या है? वो
ये तुम्हारे कलेक्शन की भैंस की टांग मारो। डिक जरा बताना मेरे हैट कहाँ पे है? This will be more useful when I have something to identify. जाता कहाँ पे? इतना सब कुछ मिलता है मेरे को। इतना सब कुछ मिलता है, जाता कहाँ पे ये? अभी जो मुझे हेड मिली वो गई कहाँ पे अभी? अभी क्या रापची हेड मिली थी मेरे को? एक सेकेंड। अरे वाह, ये भी मिला है मुझे। कहाँ जाके उड़ू? मेरे को बाहर जाके उड़ता हूँ मैं। रहने दे रूम। चल रहा हूँ, चाहिए जीवन में मेरे सब इसकी तो। नहीं, झाड़ू मिली अपने को। ये काफी सही है, काफी सही है, मुझे पसंद आई। बूम, गाड़ी चला रही है। अब इधर से जाना था, ठीक है, सही है। अब मिशन पे ध्यान देते हैं। बहुत बकचोदी कर ली। यार प्रोफेसर एकदम मिलते नहीं है। प्रोफेसर गार्लिक काय होगा था? प्रोफेसर गार्लिक का पे अंदर जाके ढूंढते अपन प्रोफेसर को। How nice to see you, my young friend. I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight.
That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. आज बहुत टाइम खेल लिया रे मैंने. Offline books from कहाँ से? I'm going to have to use 𝐥𝐤𝐤𝐞 to get those books. इकट्ठा करने के लिए. Confringo! 𝐥𝐤𝐤𝐞! Got it. Only 4 more to go. और कहाँ है? वो रही. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. और 2 कहाँ पे? Reading can be as magical. Library. वो रही. कहाँ गई इसकी तो. 𝐥𝐤𝐤𝐞! और एक उस तरफ ही होगी और कहाँ होगी? आजा किधर गई? किधर भाग रहे? That's the last book. Now to take them back to Cressida. इधर ही है क्या? नहीं नीचे ही है. ठीक है. और कौन चाहिए? और प्रोफेसर. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong, perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want me reading my diary. What was that for? It's not the written exam. और क्या करना बचा है अभी? I think defender should be. और कौन है भाई? I think so मैंने एक यहाँ पे भी देखा था, हॉग्समीड में भी देखा था कोई तो. हाँ, किसी को तो मेरी काम की जरूरत है ऐसा मैंने सुना था, तो उससे भी जाके मिल लेते हैं. ओके. Does it get any more cozy than Hogsmeade? इस मिशन के बाद बूम बम और गुड नाइट वाला सीन है. ओके. He'll see it was a mistake parting ways with. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's 𝐥𝐤𝐤𝐞 Barnes, and no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started.
said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? I do. I'm not comfortable with him. I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. ठीक है. Seems I need to find Mr. This must be it. अंदर किधर जाने का भाई? यार ऐसे मुझे मत दिया करो बे. This must be the cellar. How to find that venomous tentacula? Better not let Mr. Lawley see me. What could be stirring? Stop! Can't bend it! अबे यार, मुझे लगा उसको मार सकते हैं अपन. Try again. दुनिया में लोगों को होगा कभी What could be stirring? बेटा तेरे पास नहीं है वो. Stop! Can't bend it! अबे पावर यूज कर ना. क्या गधा हूँ मैं. Better not let Mr. Lawley see me. What could be? Stop! Can't bend it! अबे तू क्या मेरे पीछे घूमता रहेगा क्या? फ्रीजर ट्राई करो उस पे. Better not let Mr. Lawley see me. What could be? Stop! Can't bend it! तेरी तो इसका कुछ कर भी सकते हैं अपन. Better not let Mr. Lawley see me. इसका कुछ करना पड़ेगा भाई. Aloha Mora. फटाफट. Aloha Mora.
venomous tentacula. लॉल भाई Stop, bandit! क्या नसीब है मेरा के मारे मत के बूटे के मारे तो दरवाजा किस लिए रखा है वहां पे Where is that venomous tentacula? इनको मार सकता हूँ मैं इनसे डरने की जरूरत नहीं है वैसे तो find a way Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. अच्छा इसके लिए आए थे आप क्या अबे तेरी तो hit flaming spider below ऊपर से मारना है ठीक है मारेंगे चलो थोड़ा एक्सपी पॉइंट भी तो चाहिए अपने को चल तू भी जा अबे ओ किस खुशी में हाँ मर साले मर जा रहा है मुझे कोई शौक नहीं अब रिटर्न कैसे जाना है क्या बकचोदी थी ये एक्सपेल वेस्ट हो गया मेरा Any luck retrieving a certain friend? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. Let's see who's volatile now. चलो भाई 3 घंटे के स्ट्रीम हो गए बाय बाय टाटा गुड बाय आज भी अपने 310 ने हुए Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. आज भी अपने 310 ने हुए यार. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar.
बाय 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 बाय। चलो निकलते। बाय मूनलाइट क्वीन। निकलते फिर अभी। मेरे दिल को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। ये अच्छा खासा चल रहा था मेरा, खामखा मैंने उंगली करके गड़बड़ कर दिया। 176। चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा।